Question number 5. Particles x and y move in a straight line through the points A and B. Particle x starts from rest at A and moves towards B. At the same instant, y starts from rest at B. First of all, we will sketch this. This point is A and this is B. This point is B. This particle is x, moves towards B. Initial speed is 0 because particle is at rest. Start from rest. This particle is B. At the same instant, then when x starts its motion, y starts its motion towards this side. Starts from rest means u is equal to 0. At time t seconds after particle starts moving, the acceleration of x, this particle is y, the acceleration of x in the direction AB is given by acceleration time is given for particle x. So we can write for x, acceleration is 12 t plus 12 meter per second. For particle y, acceleration time is 24 t minus 8. It is given, part A is, it is given that velocities of x and y are equal when they collide. So first of all, we will find the velocities of x and y. This question is from kinematics of motion in a straight line. We know that if we integrate acceleration, we get velocity. So first of all, we will find the velocities of x and y by integrating. First, we integrate the first relation. इस रिलेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट वेलोसिटीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स x एंड y. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 1 जो x पार्टिकल के लिए है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट वेलोसिटी. राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड को एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास आती है. तो राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे with respect to t. We get v is equal to 12 t square over 2 plus 12 t plus c. This becomes v is equal to 6 t square plus 12 t plus c. Now c is the constant of integration. Now we will find the value of c by using the initial conditions. We know that since the particle start from rest, so then t is equal to 0, v is equal to 0. जब हम t को 0 और v 0 पुट करेंगे तो we will get c is equal to 0. So velocity of x will be, हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, velocity of x will be 6t square plus 12
C is 0. Say this is equation number 3. Now, in the same way, we will integrate the equation number second, which is for particle y. So we get velocity of y, we will integrate this equation number 2, 24t minus 8 with respect to t, we get 24t square over 2 minus 8t plus c. Again, the initial condition, since the particle starts from west, this means that t is equal to 0, v is equal to 0. When t 0, v 0, तो c भी 0 होगा. तो सो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ y जो है that will be 12t square minus 8t. Now the velocities are equal, so vx is equal to vy. Vx is 6t square plus 12t is equal to 12t square minus 8t. From here इसको अरेंज कर लेते हैं. तो 6t square minus 20t is equal to 0. From here we get two values of t. Taking common 2t, 3t minus 10 is equal to 0. This means that 2t is equal to 0. From here t is equal to 0, or 3t minus 10 is equal to 0. t is equal to 10 over 3. ये हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई हैं where the velocities are equal. This time t is equal to 0, that shows that when the particles are at rest, then t is equal to 0. Now we get t is equal to 10 over 3 and t is equal to 0. Now it is given that instead that AB is equal to 36 meters. Verify that x and y collide after 3 seconds. First we will find the distance. पार्ट ए में है, वी हैव ये देखिए वेलोसिटीज को इक्वल करके हमारे पास टाइम आया है, और वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी. डिस्टेंस ए बी. नो the velocities are equal when they collide. We have to find the distance AB. या डायग्राम में शो करता हूँ मैं. This distance is, they collide, the particles collide. Suppose at this point the particles collide. यहाँ पे collide हो जाते हैं. So suppose the distance of particle A is S x, and the distance traveled by particle Y is sy. वो ये होगा.
This is sy. Now distance, अभी हम distance find करेंगे. Distance covered by particle x will be, now we will integrate velocity time relation. Velocity को integrate करेंगे for particle x, so we will get sx, distance covered by particle x. We integrate velocity 6t square plus 12t. The limit is, ये देखें, ये हमारे पास लिमिट आएगी 0 to 10/3. When they collide, the time, when the velocities are equal, we get time 0 and 10/3. तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी. तो यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं. लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करते हैं, तो वी गेट sx will be 6t3/3 plus 12t square over 2. Applying the limit 0 to 10/3, अपर एंड लोअर लिमिट ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. अप्लाइंग द लिमिट्स, एस एक्स विल बी 2 into, we will put 10/3 in place of t, so we get 2 into 1000 over 27 plus 600 over 9. ये भी हमने 10/3 इन प्लेस ऑफ टी पुट किया है, तो माइनस 0 से वो ये 0 आ जाएगा. तो सो वी गेट x sx will be calculate, after calculating we will get 3800 over 27. In the same way we will find distance covered by particle y. We will integrate velocity time relation of y, वो ऊपर आप देख रहे हैं. velocity time relation हमारे पास है पार्टिकल y के लिए 12t square minus 8t, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. तो we will write as y, distance covered by y particle, इंटीग्रेट करेंगे 12t square minus 8t को, और लिमिट is same 0 to 10/3. Integrating 12t3/3 minus 8t square over 2, limit 0 to 10/3. ये यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाते हैं, 4 आ जाएगा, ये यहाँ भी 4 आ जाएगा. When we apply the limits, sy will be upper minus lower limit 4. ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. वी आर पुटिंग 10/3 in place of t. We get 4000 over 27 minus 400 over 9. So we get sy is equal to 2800 over 27. Now the distance AB, ऊपर आप डायग्राम में देख रहे हैं, sx minus
एस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट ए बी। तो सो ए बी जो है हमारे पास, डिस्टेंस ए बी विल बी एस एक्स माइनस एस वाई, वी गेट 1000, एस एक्स ये है और एस वाई ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1000/27 आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 37.0। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, it is given instead that AB is equal to 36 meter. हमने वेरीफाई करना है that x and y collide after 3 seconds. So we know that AB is equal to 36. AB हमारे पास SX distance covered by x minus distance covered by y. So putting the value of x and sy, 2t cube plus 6t square minus 4t cube minus 4t square, or this becomes 2t cube plus 6t square minus 4t cube plus 4t square minus 2t cube plus 10t square. दिस इज ए बी। अब हमने वेरीफाई करना है कि वो दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जाते हैं आफ्टर 3 सेकेंड। पुट टी इज इक्वल टू 3, T3 पुट करेंगे तो वी गेट ए बी इज इक्वल टू -2 3 क्यूब प्लस 10 इंटू 3 स्क्वेयर, यहाँ से -54 प्लस 90 which will be equal to 36. This shows that the distance is 36. This verifies that x and y collide after 3 seconds. Now we move to the next question, that is question number 6. A car of mass 1750 kg is pulling a caravan of mass 500 kg. The car and the caravan are connected by a light rigid tow bar. कार और caravan दोनों की masses given है. They are connected by a light rigid tow bar. The resistance to the motion of the car and the caravan are 650 and 150 respectively. दोनों के लिए resistive forces given है. The car and caravan are moving along a straight horizontal road at constant speed 24 meters per second. Find the power of the car's engine. First we sketch the diagram. Diagram is this. This is a car. This is the caravan. Car, caravan connected by a light rigid tow bar. Tension T, ये टेंशन जो है ये फॉर कार है और दिस टेंशन इज फॉर कैरावन। इसमें टेंशन सेम होगी।
or we have to find the power of the car's engine. This is the power of the car's engine. So force generated by the engine of the car will be P over V. P is the power over speed. This is the driving force. So friction resistive force on car is given, that is 650 Newton. Resistive force for Caravan is 150 Newton. Masses are given. Mass of Caravan is 500 kg. Mass of car is 1750 kg. अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाएंगे. V is constant, that is given 24 meter per second. Speed constant mean acceleration is 0. ये P over V जो है ये इस फार्मूला से है. पावर हमारे पास होती है F इंटू वी. तो यहाँ से F को सब्जेक्ट बना लेंगे P over V. इसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. नो नेट फोर्स विल बी दिस P over V. P हमें फाइंड करना है. P over V. V is 24 minus T. टेंशन जो कैरावन साइड पे है माइनस टी, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस टी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. कैंसल आउट हो जाते हैं बाद में. माइनस अपोजिंग फोर्स ऑन कार रजिस्टर फोर्स, दैट इज 650. रजिस्टर फोर्स ऑन कैरावन इज 150, दैट इज minus 150. This is the net force. We are applying here F is equal to ma, Newton's second law. So A acceleration is 0 because speed is constant. Acceleration is 0. No, from here we can find ये cancel out हो जाता है. टेंशन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो हमारे पास जो है वो P over 24 minus 800 is equal to 0. From here P over 24 is equal to 800. P will be equal to 19200 watt. और इसको हम, ये हमारे पास थाउजेंड्स में आ रही है वो पावर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. किलोवाट में 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट P is equal to 19.2 kilowatt. In both ways the answer will be correct. And the part second of this question is the engine power is now suddenly increased by 40 kilowatts. This means that power is now, इसको वॉट में लिखेंगे तो 40,000 वॉट होगा हमारे पास पावर. Speed is same 24 meter per second, which is constant. It is given in the question statement. Now find the instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration means जब suddenly power increase होगी तो instantaneous acceleration of car होगा, car and caravan. वो हमने फाइंड करना है और हमें टेंशन फाइंड करनी है 2 बार में. तो ये ए और टी हमने फाइंड करना. तो सो हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी कार के लिए और कैरावन के लिए. फॉर कार इक्वेशन विल बी 40,000 over V, 40,000 over V, that is 24 minus force of friction
650. The direction of tension on car is uh, opposite side to the movement minus T is equal to, this is net force, is equal to MA. M is 1750 A. Suppose this is equation number 1. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 क्या लेते हैं? For Caravan, equation will be T minus T जो है which is in the direction of movement, वो T वो जो है वो कैरावन के लिए है, तो T minus 150 force of friction on caravan is equal to MA. Mass of caravan is 500 A. This is equation number 2. Suppose now we are adding these two equations. आप देख रहे हैं ये हमारे पास T अपोजिट साइन में है, ये कैंसल आउट हो जाते हैं. एडिंग we get 40,000 over 24 minus 800, 650 और 150 को ऐड कर लेंगे तो 800 इज इक्वल टू मैसेज ऐड हो जाएंगे 2250 A. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड A which will be equal to 0.385 meter per second square. This is the acceleration of the car and the caravan. Now we will find tension. Now from equation number 2, T minus 150 is equal to 500 A. T will be 150 plus 500 A. Putting the value of A which is 0.385. Finally we will get tension is equal to tension will be equal to 343 Newton. Now next for part B of this question is the car and the caravan now travel up a straight hill inclined at sin inverse 0.14. ये एंगल का साइन दिया हुआ विच इज which angle is with the horizontal. At constant speed, car and caravans are travel with the constant speed V. The car's engine is working at 31 kilowatt. Power is given 31 kilowatt. So we will write here the angle theta is equal to angle of inclination sine inverse 0.14. यहाँ से हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं, वो 0 पॉइंट ये डायरेक्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू. एंड द पावर ऑफ द कार इंजन इज नो 31,000 वाट. इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं. दिस एंगल इज थीटा. इसका साइन हमें गिवन है. दिस इज कार
Caravan. This is tow bar, tension, opposite side of the tension, tension upward or tension downward on both car and caravan, frictional force, resistive force on car is F is equal to 650 Newton, on the caravan force of friction is 150. So the resistances to the motion of the car and caravan are unchanged. Find B. और यहाँ पे ये कार की ड्राइविंग फोर्स जो है वो P over V है. Now we will resolve the weights of both car and caravan. Weight vertically downward है कार का 1750 G, और ये इसके कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट इसका ये होगा perpendicular to the plane, this is along the plane. ये कंपोनेंट होगा हमारे पास 1750 G sin थीटा 1750 G cos theta. In the same way, we will resolve the weight of caravan mg 500 G. Components of weight force of friction is 150 on caravan. This component is 500 G sin theta 500 G cos theta. अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनेगी, इसकी एक इक्वेशन बनेगी. वी हैव टू फाइंड V. (31) power, the driving force of the car, which is due to the power of the car engine, P और V. P हमारे पास 31,000 है, तो 31,000 over V. This is the driving force of the car engine, minus 650 minus 150 minus T minus T प्लस T. ये देखें बोथ चीज है अपोजिट साइन, माइनस वेट का कंपोनेंट, weight of cars component which is acting along the plane in opposite direction, 1750 G sin theta minus weight का component acting on caravan minus 500 G sin theta is equal to 0. तो ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट हो जाते हैं. बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है 31,000 ओवर भी minus 800. ये दोनों के कंपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे, वो 1750 और 500 को ऐड करेंगे, वो
2250 जी sin theta आ जाता है is equal to 0. Sin theta is given. Sin theta की वैल्यू हमारे पास 0.14 है. Putting here 31,000 over b minus 800. 2250 जी sin theta को कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करके तो हमारे पास 3150 आता है. From here we can calculate b. 31,000 over b is equal to 3950. From here b will be equal to 31,000 over 3950, which will be calculated, which is equal to 7.85 meter per second. This is the speed. Now question number 7 of this paper is particles of mass 1.5 kg and 3 kg lie on a plane which is inclined at an angle alpha to the horizontal. Tan alpha is given, which is 3/4. The section of the plane from A to B. A से B plane जो है that is smooth, and the section of the plane from B to C. B to C plane is rough. The 1.5 kg particle is held at rest at A, and 3 kg particle is in limiting equilibrium. ये पार्टिकल B जो है ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है. Particle B, particle of mass 3 kg which is at B is in limiting equilibrium. The distance AB is x and the distance BC is 4 meter. डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. Show that the coefficient of friction between the particle B and the plane. Since the plane from B to C is rough, so there must be a coefficient of friction. तो हमने शो करना है 0.75. तो first of all, acceleration will be 0 because the limiting equilibrium, and the value of tan alpha is given. Tan alpha is given, that is 3/4. यहाँ से हम sin alpha और cos alpha को भी फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आना है. तो सो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ये ट्राइंगल से हमने दिस इज अल्फा. अल्फा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर. This is the base. Perpendicular base is tan alpha. Third side by Pythagoras rule से वो 5 आएगी. तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड sin alpha एंड cos alpha. sin alpha यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos alpha जो है वो हमारे पास 4/5 आ जाएगा. These values of sin alpha and cos alpha will be used in the question calculation. So हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कि क्या आती है. First of all, we will resolve this particle 3 kg weight 3g. इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा perpendicular to the plane, or this component is along the plane. Angle is same. This is alpha. This component is 3g sin alpha, 3g cos alpha. Normal reaction of the plane on the particle, which is R. Now we have to find mu.
हमारे पास होता है फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन, सो हमें एफ भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मूवमेंट, ये साइड पे होगी because movement is downward, force of friction will be in opposite direction। तो हमारे पास equation of motion for particle B जो है वो आ जाएगी 3g sin alpha minus force of friction is equal to 0 because the particle of 3 kg is in limiting equilibrium। तो हमारे पास acceleration 0 होगा, जिसकी वजह से राइट साइड 0 आई है। From here f is equal to 3g sin alpha। अब हम अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, वो साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो 3/5 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F 18 न्यूटन आ जाता है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन द सेम वे वी विल फाइंड R। अब ये देख रहे हैं R इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 3 kg mass on reaction of the plane on 3 kg mass, which is R is equal to that component which is acting on the opposite side, that is 3g cos alpha। So R will be equal to 3g cos alpha। Now the value of g is 10, cos alpha की वैल्यू हमारे पास 4/5 है। After calculating we will get R is equal to 24 Newton। Now easily we can find F is equal to mu R होता है। mu हमारे पास आ जाएगा F/R। F हमारे पास 18 है, R is 24, so from here mu is equal to 0.75, this is shown। Now next part of this question is the 1.5 kg particle is released from rest। 1.5 kg mass को हम रिलीज करते हैं from rest, this means that initial speed will be 0 and the distance A B is x meter, distance B C is 4 meter। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फ्रॉम ए टू बी, इक्वेशन हम फाइंड करेंगे ए टू बी। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन with which A is moving towards B। 1.5 kg mass moving towards 3 kg mass। The coefficient of friction between the combined particle and the plane is still 0.75। Coefficient of friction is same। The 1.5 kg particle is released from rest। In the subsequent motion, the two particles collide। ये particle 1.5 kg और 3 kg collide हो जाते हैं and coalesce, ये coalesce हो जाते हैं। The time taken for the combined particle to travel from B to C is 2 seconds। B to C 2 seconds लगते हैं B से C तक। The coefficient of friction is same 0.75। We have to find this x। x is the distance from A to B, ये हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो शो हम इसको फर्स्ट वी रिजॉल्व दिस पार्टिकल ऑफ मैथ 3 kg, इसके वेट को हमने रिजॉल्व किया हुआ है। इसी तरह हम पार्टिकल बी को भी के वेट को भी रिजॉल्व करते हैं।
is 1.5 mg, 1.5 g. This is the weight of particle A. These are the components. This component and this component. This component is 1.5 g sine alpha. This component is 1.5 g cos alpha. Now from A to B, from A to B, first of all we will find the acceleration. देखिए A to B movement for movement of part 1.5 kg, उसके लिए वेट का कंपोनेंट है जो which will act as a force 1.5 g sin alpha. Since the surface is smooth from A to B, so no friction, तो so हमारे पास आ जाएगा 1 mg sin alpha is equal to ma. This means that 1.5 g sin alpha is equal to ma. 1.5 कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास A will be equal to g sin alpha. Sin alpha की वैल्यू हमारे पास है 3 और 5, तो सो we get A is equal to 10 into sin alpha is 3 over 5. तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 kg mass. अब हम फाइंड करेंगे कि किस वेलोसिटी से 1.5 kg mass जो है वो पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंचता है. वी विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 1.5 kg mass. तो उसके लिए इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड 0 है, उसकी फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है एट पॉइंट बी. डिस्टेंस इज x and a acceleration is 6 meter per second. Distance is x, so we will use v square minus u square is equal to 2as. Initial speed is 0, so v square will be equal to 2 into a is 6 as is x. V square is equal to 12x. We can say that v is equal to 12x under root. This is the speed of particle 1.5 kg mass at point B. Now the particle collides when they collide. तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं when they collide, their masses will be added. After collision, we have to find the speed. So हम यहाँ पे लिखते हैं when two particles collide, we use law of conservation of momentum m1 to find the speed of combined particles after the collision. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 after the collision they collide. m1 और m2 को हम ऐड करेंगे तो उनके लिए स्पीड एक ही होगी. vc represents the speed of combined particles. Putting the values, m1 is 1.5, u1 is
u1, ये देखें हमने स्पीड अभी फाइंड की है। u1 जो है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल 1.5 kg एट पॉइंट बी है, वो हमारे पास 12x अंडर रूट है प्लस 0 बिकॉज पार्टिकल ऑफ 3 kg mass is at rest, m1 plus m2 we get, दोनों को masses को ऐड करेंगे, we will get 4.5. vc is the combined speed of the two particles after the collision. From here we can find v combined speed of the particle 1.5 12x under root over 4.5, तो सो बी सी हमारे पास आ जाएगा 12x अंडर रूट ओवर 3। नो, अब हमने फाइंड करना है यहाँ से x, तो वी विल यूज दिस इक्वेशन s is equal to v into t. This equation will be used when speed is when the acceleration is constant, when the acceleration is constant। अभी हमने ये भी जस्टिफाई करना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है, तो सो वी विल यूज दिस s is equal to vt। s हमारे पास आप देख रहे हैं डायग्राम में b से c तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4, यहाँ 4 है, और v स्पीड जो है वो v c की वो हमारे पास 12x अंडर रूट ओवर 3 है, वो हमने भी फाइंड की है 12x अंडर रूट ओवर 3 एंड टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12x अंडर रूट इज इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर ईच साइड, 12x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया है, बट अभी हमने जो हमने यूज किया s इज इक्वल टू वी टी, दिस इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है। व्हेन कुलेस तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्टिकल बी पे एट पॉइंट बी the masses of the particles are combined, तो दोनों के मैसेज को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 4.5 दिया जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5 जी उसका वेट आ जाएगा, तो सो 4.5 जी साइन अल्फा वेट का कंपोनेंट combined minus force of friction that is mu r is equal to ma, m is combined mass 4.5 a, तो ये हमारे पास 4.5 जी जो है ये 45 आ जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, माइनस म्यू इज 0.75 एंड आर नॉर्मल रिएक्शन है, ये देख रहे हैं आप नॉर्मल रिएक्शन एट बी, वो कंबाइंड मैथ का लेंगे हम, दैट विल बी that will be 4.5 g cos alpha, 4.5 g cos alpha is equal to 4.5 a,
तो कॉज अल्फा की और जी की जब वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 3/5 माइनस 0.75 45 4.5 जी को 45 लिख रहे हैं। कॉज अल्फा की वैल्यू जो है वो 4/5 है, इज इक्वल टू 4.5 ए। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारे पास जो एक्सलेशन है वो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि नो एक्सलेशन। एक्सलेशन ज़ीरो, कांस्टेंट एक्सलेशन भी कह सकते हैं कि एक्सलेशन ज़ीरो है, तो सो वी कैन यूज एस इज इक्वल टू बी टी। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एक्स इज इक्वल टू 3, जो कि हमने पहले फाइंड कर लिया है। नो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, find the total loss of energy of the particles from the time the 1.5 kg particle is released until the combined particle reaches C. Loss of energy हमने find करनी है from the time when 1.5 kg particle is released until the combined particle reaches at C. इसकी मूवमेंट के अलोंग हमने जो एनर्जी लॉस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको हम करेंगे फर्स्ट फॉर द मोशन ए बी, हम ए बी और बी सी दोनों डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग ये एनर्जीज फाइंड करेंगे। फॉर ए बी डिस्टेंस, फॉर ए बी के लिए हमें ए से बी तक के लिए हमें हाइट चाहिए। तो हाइट हम इस ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये हाइट है ए बी की, ये एंगल अल्फा है, दिस इज हाइट और दिस इज गिवन 3। आप डायग्राम में दे सकते हैं। यहाँ रेशियो लगा लें, h/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये हाइट हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए, तो उसको हम पहले फाइंड करेंगे इसको। तो h/3 साइन अल्फा 3/5, ऊपर वाले पार्ट में दे सकते हैं 3/5। तो फ्रॉम हेयर h इज इक्वल टू 9/5। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए बी होगा हमारे पास लॉस ऑफ पी ई फॉर डिस्टेंस ए बी is equal to mgh, putting the value m is 1.5, g is 10 और h हमने फाइंड किया 9/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 27 जूल आ जाता है। इन द सेम वे फॉर डिस्टेंस बी सी, इसके लिए भी हम बी सी के लिए भी हम हाइट फाइंड करेंगे। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, बी सी की हाइट सपोज करेंगे वो h है, ये प्लेन के अलाउंग डिस्टेंस 4 है, दिस इज अल्फा। h ओवर रेशियो यूज करेंगे, h/4 इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा गिवन है, h/4 इज इक्वल टू 3/5, h इज इक्वल टू 12/5। ये हाइट बी सी की जो है वो 12/5 आई है। इसके लिए भी हम देखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। लॉस लॉस ऑफ पी ई
for BC distance, वो भी mgh आएगा। mgh m नो, अब हम इसको कंबाइंड मैथ्स को लेंगे। m g h अभी हमने फाइंड किया 12/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 108 जूल आ जाता है। तो टोटल लॉस इन पीई, लॉस इन पीई टोटल जो है वो हमारे पास 108 प्लस 27, दैट विल बी 135 जूल। ओके, नो काइनेटिक एनर्जी, हम देखते हैं कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें। काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे आफ्टर द कोलिजन, जो फाइनल स्पीड है उसके साथ। काइनेटिक एनर्जी विल बी of the combined masses 1 over 2 mv square, 1 over 2 m is combined mass is 4.5 and v square is, v हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 12 और x 12x अंडर रूट 12x अंडर रूट ओवर 3 ये स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, ये एडिशनल पेज पे मैं कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है 1 over 2 m v स्क्वायर वो आएगा हमारे पास 12 इंटू 3 ओवर 9, पुटिंग द वैल्यू, ये v स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। स्केयर लेके यहाँ से स्केयर ले लिया इसका, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 जूल आ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, वो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में 135 लॉस हुआ है, ये गेन हुआ है। तो लॉस इन एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 135 जूल माइनस 9 जूल, that will be equal to 126 joule. This is the final answer.